Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome in college physics. So student आज हम डिस्कस करेंगे wave function of hydrogen atom. The general form of wave function for hydrogen atom is this one. So now we derive this general form of hydrogen wave function and then we obtain the particular wave function for different state for hydrogen atom. सो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये जो जनरल वेव फंक्शन है हाइड्रोजन एटम का, इसको हम किस तरह ऑब्टेन करेंगे. बिफोर द डेरिवेशन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम, लेट कंसिडर दिस इज ए हाइड्रोजन एटम. द सेंटर शो द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन दिस वेव फॉर्म. सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रागले एंड श्रोडिंगर, हमारे पास जो पार्टिकल है जब वो मोशन करता है तो उसके साथ जो है एक मैटर वेव एसोसिएटेड होता है या उसके साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएटेड होता है. अगर इसी वेव फंक्शन को हम किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए डिराइव करें तो उस पार्टिकल के साथ जितनी भी प्रॉपर्टी रिलेटेड है उसको हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं. सो आइए हम डिराइव करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव करता है in this path. So what will be the wave function for this electron? In the hydrogen atom, the charge of the proton is plus E and that of the electron is minus E. And the electrostatic potential energy between the proton and electron in the absence of external field will be equal to this one. So this is the electrostatic potential energy between electron and a proton for hydrogen atom. Where are the distance between proton and electron, and epsilon naught, this one show the permittivity of free space. As the proton is 1836 times heavier than the electron, so for convenience the proton can be considered to be stationary with the electron in motion around it. The time independent Schrodinger wave equation in 3 dimension for the electron will be what? So this is the time independent Schrodinger wave equation, where H show the Hamiltonian operator, psi show the eigenfunction या wave function, and E show the eigenvalue, and psi again show the eigenfunction. So we know that the Hamiltonian is equal to kinetic energy operator plus potential energy operator, correct? But the kinetic energy operator equal to this one, correct? And potential energy will be V as it is. So the total Hamiltonian will be equal to what? Kinetic energy plus potential energy. अब इसी को हमने रिप्लेस करना है यहाँ पर, so we obtain this expression where this m show mass of the electron, del square is the Laplacian operator, v is the potential energy, and E is the eigenvalue of energy. As the Laplacian operator, del square equal to this one. So the Laplacian operator and spherical polar coordinate will be what? अब हमने इसी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना है in spherical polar coordinate, because we know that the electron move around the nucleus having spherical nature, means its potential energy is spherically symmetric. So the Laplacian operator del square and spherical polar coordinate is equal to this one. So the time independent Schrodinger wave equation 2, this one become after the substitution this value equal to this one. This is known as the differential equation for hydrogen atom in spherical polar coordinate system. Again noted, in this case this wave function is a function of r, theta and phi, so we need to find psi. So for this purpose we introduce separation of variable method. So we need to express this psi is equal to the product of capital R, capital theta and capital pi. Means हमारे पास जो वेव फंक्शन है ये इसमें 3 डिपेंडेंट है. सो इसको हम द प्रोडक्ट ऑफ दैट 3 डिपेंडेंट लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे. मीन्स इस मेथड को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड, इन विच this function is expressed in the product of dependent variables. So separation of variable.
The equation in spherical polar coordinate can be easily separated into three equations, each involving a single independent variable. For this purpose, we assume the wave function psi, which is a function of r, theta and pi, to be the product of three functions. That is, express the wave function psi, which is a function of small r, small theta and small pi, equal to capital R is a function of small r, capital theta is a function of small theta, capital pi is a function of small pi. Are eliminating these subscripts, we obtain this one. Or this can be written as this form, where this show capital theta, this show capital pi. Now अगर इसी एक्सप्रेशन को या इसी एक्सप्रेशन को हम पुट करें इक्वेशन नंबर 4 में, यहाँ पर हम पुट करें कैपिटल आर, कैपिटल थीटा एंड कैपिटल पाई, तो स्मॉल आर के लिए कैपिटल थीटा और कैपिटल पाई कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे. सिमिलरली अगर यहाँ पर हम पुट करें साई की जगह कैपिटल आर, कैपिटल थीटा, कैपिटल पाई, तो इस थीटा के लिए कैपिटल पाई और कैपिटल आर कांस्टेंट कंसिडर किए जाएंगे और उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे. सिमिलरली अगर इस साई की जगह हम पुट करें कैपिटल आर, कैपिटल थीटा, कैपिटल पाई, तो स्मॉल पाई के लिए कैपिटल आर और कैपिटल थीटा कांस्टेंट कंसिडर की जाएंगे क्योंकि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है, तो उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे. एंड सिमिलरली रिप्लेस दिस साई इक्वल टू कैपिटल आर, कैपिटल थीटा एंड कैपिटल पाई. So this equation number 4 by putting equation pi become this one. Here we used ordinary derivative instead of partial derivative because each function depends on only one variable. Now multiply each term by r square sin square theta divided by capital R, capital theta and capital pi. इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करें. सो दिस एक्सप्रेशन कन्वर्ट टू दिस फॉर्म. करेक्ट. नाउ ट्रांसपोजिंग द थर्ड टर्म टू द राइट साइड. अगर इस थर्ड वाले टर्म को हम राइट में ले जाए, सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन. नाउ the right hand side is a function of only pi while the left hand side is a function of r and theta. Now we need to solve this expression. So this term is also known as azimuthal wave equation. So how we solve this azimuthal wave equation? The left side of equation 7 is a function of r and theta and the right side is a function of pi only. Thus each side can be varied independently of other. Therefore the equation will be true only if both sides are equal to the same constant. And this same constant is denoted by ml square, where ml is called magnetic quantum number. Therefore the right side of equation 7, this will be equal to ml square. ये जो है हमारे पास राइट साइड ये पाई का फंक्शन है और लेफ्ट आर और थीटा का फंक्शन है, और आर और थीटा जो है वो फाई से इंडिपेंडेंट है. मीन्स राइट में हमारे पास और लेफ्ट में हमारे पास जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है और दोनों इक्वेशन इक्वल है. तो ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी एक कांस्टेंट के बराबर हो और राइट हैंड साइड भी एक कांस्टेंट के बराबर हो और वो कांस्टेंट हमारे लिए क्या हो, सेम हो. सो लेट कंसिडर द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 7 इज इक्वल टू ml स्क्वायर, और बाय सिंप्लीफाई दिस वी ऑब्टेन दिस वन. नाउ अगर इस इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें या इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाए, सो यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल डी है वो बराबर है डी और डी पाई के. सो दिस एक्सप्रेशन बिकम दिस वन, आर डी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा एम एल. दिस इज द रूट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8 इज इक्वल टू दिस वन. ये हमारे पास जो है 8 या इक्वेशन या ये वाला हमारे पास जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है, ये है. सो हमने पाई को कैलकुलेट किया. करेक्ट. याद रखिए हमें मालूम है कि हमारे पास जो पाई है वो बराबर है ए एक्सपोनेंशियल आयोटा एम एल पाई, और याद रखिए जब भी एक्सपोनेंशियल के पावर में आयोटा हो तो उसका पीरियड होता है 2 पाई. सो इट मीन्स आफ्टर 2 पाई दिस फंक्शन रिपीट इटसेल्फ. सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज that is capital pi is a function of pi equal to capital pi is a function of pi plus 2 pi, where 2 pi is the period. Means after 2 pi this function repeat itself. So now putting this value in this one, similarly this value in this one, so we obtain this expression. Or by Euler equation this can be written as this Euler equation e iota theta cos theta plus iota sin theta,
where theta equal to 2 pi ml. So this left hand side become this one. Now this cos 2 pi ml is real, this one is real, and 0 iota is imaginary. So compare real and imaginary part. So we obtain cos 2 pi ml equal to 1. R simple means 2 pi ml equal to 0 plus minus 2 plus minus 4 pi. R ml equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3. This ml is called magnetic quantum number, and its value will be what? 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on. So हमने ml की वैल्यू भी कैलकुलेट की. अब मसला ये है, हमारे पास जो ये वेव फंक्शन है इसको हमने नॉर्मलाइज करना है. सो टू नॉर्मलाइज the above equation, we use normalization condition, this one, but here we put the limit 0 to 2 pi because we know that in case of spherical polar coordinate system, the pi vary from 0 to 2 pi, theta vary from 0 to pi, and r vary from 0 to infinity. So putting the pi steric value and pi value, so we obtain this one. Or solve this integration, we obtain a equal to 1 over square root 2 pi. So the normalized wave function become phi ml equal to 1 over square root 2 pi e iota ml phi. तो ये हमारे पास जो है phi की वैल्यू आ गई. अब हमें मालूम है कि हमारे पास जो इक्वेशन 5 है उसमें हमने phi को तो कैलकुलेट किया, लेकिन अब हमने कैलकुलेट करना है कैपिटल थीटा और कैपिटल आर को कैलकुलेट करना है. अगर हम इस तीनों को कैलकुलेट करें और तीनों के एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, so we obtain the general wave function for the hydrogen atom. So this is the normalized azimuthal wave function for hydrogen atom. Now, as we know from equation number 7, this is our equation number 7, we consider this right hand side equal to ml square. Similarly, this one will be equal to a constant, that is ml square. So now, equating the left hand side to constant ml square, this one. Now, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, अगर इस टर्म को, इसको और इसको हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें, सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन. नाउ मल्टीप्लाई दिस कैपिटल थीटा और सिंपली मल्टीप्लाई कैपिटल थीटा टू ईच टर्म. अगर यहाँ से हम कैपिटल थीटा को मल्टीप्लाई करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें, सो वी ऑब्टेन दिस वन. Now transposing the second term to the right hand side, अगर इस वाले टर्म को हम राइट साइड में ले जाए, so we obtain this expression. Again, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, so the left hand side is only r dependent and the right hand side is only theta dependent. So again, if we consider this right hand side equal to a constant and this left hand side equal to a constant, and then we solve, so we obtain, let the left hand side is a function of r only, while the right hand side is a function of theta only. Hence both sides are equal, which means both sides are equal to a constant, and that constant is known as beta, where beta equal to L into L plus 1, where L is known as orbital angular momentum quantum number. So this right hand side equal to beta. This is the polar form, the polar equation for hydrogen atom, because here is the polar angle theta is involved. Similarly, this left hand side equal to beta, this one, and this equation is known as radial wave equation for hydrogen atom. अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसे हम कैपिटल थीटा को ऑब्टेन करेंगे, और अगर इसी को हम सॉल्व करें तो इसे हम कैपिटल आर को ऑब्टेन करेंगे, और अगर फिर हम कैपिटल थीटा, कैपिटल आर और कैपिटल पाई की इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, सो वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम. सो नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन. So solution of polar wave equation. As from equation 10, the polar wave equation equal to this one. By rearranging this, अगर इसको हम rearrange करें, so we obtain this form. So this is our equation number 10. अगर इसको हम rearrange करें means अगर इस कैपिटल थीटा को यहाँ भी मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी मल्टीप्लाई करें और फिर इसको rearrange करें और बीटा की वैल्यू पुट करें, so by rearranging this we obtain this one. Now, to solve this equation, we use the substitution method. Let x equal to cos theta, so we know that sin theta equal to 1 minus cos square theta square root, but cos theta equal to x, so sin theta equal to 1 minus x square. Now differentiate this with respect to theta, so we obtain this one. Similarly, using the chain rule,
derivative of capital theta with respect to small theta equal to derivative of capital theta with respect to x dot dx by d theta. So अगर यहाँ पर हम dx by d theta की वैल्यू ये वाला पुट करें, so we obtain this expression. Now अगर हम बोथ साइड से इस थीटा को एलिमिनेट करें, so we obtain this one. Now अगर हम बोथ साइड को माइनस साइन थीटा से डिवाइड करें, साइन थीटा से डिवाइड करें, so we obtain this one. Now multiply equation a by sin theta. अगर इस a equation को हम sin theta से multiply करें both side, so we obtain this one. But sin square theta equal to 1 minus x square. So अगर इसकी वैल्यू हम पुट करें this one. So this is our sin theta d capital theta by d theta. अब हमने क्या करना है, हमने जो है यहाँ पर जो है हमने जो है इसकी वैल्यू पुट करना है. कौन सी वैल्यू को पुट करना है, ये वाला. और सिमिलरली इसकी वैल्यू को हमने पुट करना है, कौन सी वैल्यू को पुट करना है, ये वाला. सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन 11 बिकम दिस वन. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 11. नाउ दिस माइनस इनटू माइनस प्लस. और अगर यहाँ पर हम जो है फैराडे रूल को अप्लाई करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आवर फर्स्ट फंक्शन एंड डी कैपिटल थीटा बाय डी एक्स आवर सेकंड फंक्शन. तो अगर हम इस पर प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करें, सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन. This is known as associated Legendre equation and its solution is called Legendre polynomial. याद रखिए हमारे पास जो है associated Legendre equation है और ये हमारे पास differential equation है और ये एक advanced equation है और इसकी solution जो है हमारे पास very difficult है क्योंकि इसमें जो mathematics यूज़ होता है वो एक advanced mathematics है. तो automatically हमने इस equation की direct solution को put करना है. So the general solution of this Legendre differential equation is known as Legendre polynomial and that is equal to this one. Capital theta Lm equal to square root 2l plus 1 into L minus m factorial divided by 2 into L plus m factorial multiplied by Plm cos theta where L equal to 0, 1, 2, 3, 4 and so on and m equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. And this P is known as Legendre polynomial. Remember, the value of the Legendre function or Legendre polynomial for some value of L and M will be what? याद रखिए हमारे पास यहाँ पर L 0 हो, M 0 हो, so then this expression equal to 1. अगर हमारे पास L 1 हो, M 0 हो, then this expression equal to this one. Similarly, अगर हमारे पास L 2 हो, M 0 हो, then this expression equal to this one. Similarly, अगर हमारे पास L 3 हो, M 0 हो, so then this expression equal to this one. याद रखिए ये जो लेजेंडर फंक्शन है इसका अपना एक प्रूफ है. अगर आप लोगों ने मैथमेटिकल में एमएमपी पढ़ा हो तो इसमें जो है बिल्कुल इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रूफ एग्जिस्ट है. लेकिन चूँकि हमने क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन को डिस्कस करना होता है तो इसी वजह से हमने जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पर डायरेक्ट सोल्यूशन लिख दिया और ये हमारे पास जो है इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज the solution of further equation for hydrogen atom. Similarly हमने कैपिटल R को भी मालूम करना है और देन हमने सारे कैपिटल थीटा, कैपिटल R और कैपिटल पाई को इक्वेशन 3 में पुट करना है तो ऑटोमेटिकली वी obtain the general solution for hydrogen atom. So now our next task is what? Our next task is this one. Our next task is this one. This is a radial wave equation for hydrogen atom. And we need how to calculate or solve this equation. So आइए अब इसको ट्राई करते हैं. Now last one, the solution of radial wave equation. So as we know from equation 11, this is our equation 11. This is a differential equation and by simplify this we obtain finally Lagrange differential equation or Lagrange function. So the solution of Lagrange function or this differential equation equal to this one. ये इक्वेशन जो है हमारे पास एक और फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिस पर हम कभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि हमारे पास बहुत लेंथी टॉपिक बनता है अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सॉल्व करें. सो ऑटोमेटिकली फिजिक्स में हमने जो है सोल्यूशन को डिस्कस करना होता है तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास इसके हम डायरेक्ट सोल्यूशन लिखते हैं और इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास वो ये है कैपिटल R एन एल वेयर एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर माइनस स्क्वायर रूट 2 और एन ए नॉट, एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ए नॉट मीन एंगस्ट्रॉम, एन माइनस एल माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n into n plus l फैक्टोरियल क्यूब
into 2r divided by n naught power L into Lagrange function L n plus L 2L plus 1 into 2r divided by n naught multiplied by exponential minus r over n naught, where this capital L NL into 2L plus 1 is called associated Lagrange function, and this have different values. The values of Lagrange function are this one. This is the Lagrange function value. This is L0 means n plus L0. This 0 means 2L plus 1 0. So it equal to 1. L10 x equal to 1 minus x. L11 minus 1 and so on. This is known as Lagrange function. Correct? Now कंक्लूजन, हमारे सारे टॉपिक का जो कंक्लूजन बनता है वो हमारे पास ये बनता है, लेकिन कंक्लूजन से पहले यहाँ पर जो है प्रेजेंट जो हमारे पास लिगोरी है इसमें ये जो है हमारे पास वो बराबर होता है 2 और n naught की. नाउ द कंक्लूजन ऑफ आवर टॉपिक इज व्हाट. हमें मालूम है कि हमारे पास एक इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 5 जो इस फॉर्म में था, और इस फॉर्म में जो है हमारे पास 3 वेरिएबल है, कैपिटल आर, कैपिटल थीटा एंड कैपिटल पाई. सो कैपिटल पाई हमारे पास बराबर है इक्वेशन नंबर 9 से इसके, और हमारे पास कैपिटल थीटा बराबर है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12 इक्वल टू दिस वन, एंड सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13 द कैपिटल आर इक्वल टू दिस वन. सो द हाइड्रोजन वेव फंक्शन विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री. अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करें सो वी ऑब्टेन द हाइड्रोजन वेव फंक्शन इन दिस फॉर्म. सो दिस इज द जनरल वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम. सो दिस इज द जनरल वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम. याद रखिए, अब इसी के बेस पर जो है हम वेरियस स्टेट की वेव फंक्शन को आसानी से डिराइव कर सकते हैं. आइए देखते हैं प्रॉब्लम 1. व्हाट विल बी द वेव फंक्शन फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम होता है ग्राउंड स्टेट में, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये जो है इसका फर्स्ट शेल है. तो इलेक्ट्रॉन जो है इस शेल में मूव करता है. तो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन दिस ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1. सिमिलरली द ऑर्बिटल angular momentum quantum number for this electron is equal to 0, and the magnetic quantum number for this electron m equal to 0. So to find the wave function, we first find out the azimuthal wave function. As you know from equation number 9, that azimuthal wave function phi ml equal to 1 over 2 pi square root exponential iota ml phi. तो अगर हम यहाँ पर एम एल की वैल्यू 0 पुट करें और यहाँ पर भी एम एल की 0 वैल्यू पुट करें, सो वी ऑब्टेन फाई नॉट इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई. सो दिस इज द azimuthal वेव फंक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. नाउ द पोलर वेव फंक्शन. द पोलर वेव फंक्शन simply defined as this one, but here we put L equal to 0, M equal to 0, here L0, M0, L0, M0 and L0. From the equation number 12 we know that this one, this is the polar wave function for hydrogen atom. So अगर इसमें हम वैल्यू को पुट करें so we obtain this expression and this become this expression, correct? But the Legendre polynomial P naught power naught cos theta equal to 1, and अगर उसको हम सिंप्लीफाई करें so we obtain 1 over 2 square root, 1 over 2 square root. यहाँ पर हमारे पास जो है ये पाई नहीं है. So this is 1 over 2 square root is the polar wave function for ground state of hydrogen atom. Now the last one, the radial wave function for hydrogen atom, which is defined this one from equation number 13. So अगर यहाँ पर जो है हम n की वैल्यू 1 पुट करें, यहाँ n1 L0 n1 n1 L0, यहाँ पर L0 L0 n1 L0 n1 and n1, और इसको हम सिंप्लीफाई करें with step by step, so we finally obtain this expression. But we know that this one, this is Lagrange polynomial and this is equal to -1, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, करेक्ट, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, so we obtain this one. So this is known as radial wave function for ground state of hydrogen atom. Now the resultant wave function for hydrogen atom psi NLM or psi 100 equal to pi naught theta naught naught and r10. अगर ये हम और इसकी हम वैल्यू पुट करें, so pi naught equal to 1 over square root 2 pi
theta naught naught is 1 over square root 2 and r1 0 equal to this one. और इसको हम simplify करें, so finally we obtain this expression. So this is known as the ground state wave function for hydrogen atom. और इसी wave function से जो है हम various information को obtain कर सकते हैं for hydrogen atom, जिसको हम बाद में न्यूमेरिकल के फॉर्म में करवाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास प्रॉब्लम कुछ इस तरह है. मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है और ये हमारे पास इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है. अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर न हो मीन्स और इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट में हो, तो याद रखिए सेकंड स्टेट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n इक्वल टू 1, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है 0 1 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है हमारे पास वो होते हैं हमारे पास 1 0 -1. तो याद रखिए अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमने वेव फंक्शन को मालूम करना है, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, सेकंड स्टेट में है और हमें मालूम है कि n इक्वल टू 2 सेकंड स्टेट में हमारे पास दो सब शेल होते हैं, पर n इक्वल टू 0 एस सब शेल और n इक्वल टू 1 पी सब शेल. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास पी सब शेल में है, n इक्वल टू 1 में है. सो अगर इसके लिए हम azimuthal wave function को मालूम करें by putting n equal to 2, n equal to 1, n equal to 0, so we obtain this one. So this is known as the azimuthal wave function for the first excited state of hydrogen atom. Now the polar wave function is general form is this one, prime equation number 12. अगर इसमें अगेन हम n की वैल्यू 2 पुट करें, l की 1 पुट करें और n की 0 पुट करें, so we obtain this expression. अगेन यहाँ पर ये टर्म जो है हमारे पास जो है ये लेजेंडर पॉलिनोमियल है और ये p10 cos थीटा बराबर होता है cos theta के. So the theta 10 equal to 6 under the root divided by 2 cos theta. So this is known as the polar wave function for the first excited state of hydrogen atom. Now the last term is the radial wave function, which is simply defined this one by putting n equal to 1, n equal to 2, n equal to 1, n equal to 0. We obtain this expression. But again this term L3 is equal to -6. तो इस टर्म की जगह हमने सिंपल पुट करना है -6 और बाकी को हमने सिंप्लीफाई करना है. हमारे पास है 3 पिक्टोरियल, सो 3 पिक्टोरियल मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो दिस बिकम 6 और उसका क्यूब है तो इस तरह बन जाएगा. नाउ अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन दिस वन. सो दिस इज नोन एज द रेडियल वेव फंक्शन फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. अब हमने मालूम करना है टोटल वेव फंक्शन पर हाइड्रोजन एटम साइड 210, that is n equal to 2, n equal to 1, n equal to 0. So this resultant wave function is the product of these three. So putting the value of phi naught, theta 10 and r21, we obtain this one. So this is known as the total wave function for first excited state of the hydrogen atom. अब याद रखिए हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में हमारे पास जो है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास जो हाइड्रोजन वेव फंक्शन है वो इसके बराबर है. इसको तो हमने ऑलरेडी डिराइव किया. पर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 इसके बराबर है. और याद रखिए अगर यहाँ पर 2 0 0 अगर इसको हम हाइड्रोजन एटम की जो जनरल वेव फंक्शन है उसको हमने डिराइव किया है उसमें पुट करें, सो वी इजीली ऑब्टेन दिस वन. या सिंपली अगर हमने 3 वेव फंक्शन को डिराइव किया है, अगर हम पोलर वाला, रेडियल वाला और एजिमुथल वाला फंक्शन यूज करें और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करें, so we obtain this one. So this is the total wave function per hydrogen atom per this state. This is the total wave function per hydrogen atom in this state, and this is the total wave function per hydrogen atom in this state, and this is the total wave function per hydrogen atom in this state. Thank you.